discuss about Adivasis and a stereotype. Student, you know what is the stereotype? First of all, I am going to discuss that one. Stereotype meaning when a person form a fixed mental image or idea of a particular person. जब कोई भी पर्सन एक माइंड में फिक्स कर लेता है एक आइडिया, एक पर्टिकुलर आइडिया और इमेज फिक्स करता है अपना माइंड में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए या ए सिंगल वन पर्सन के लिए या कोई थिंग्स के लिए, उनका जो आइडिया क्रिएट होता है, उनका जो इमेज क्रिएट होता है, दैट इज रेफर टू एज स्टेरियोटाइप. उसको नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चेंजिंग सिनेरियो इन फॉरेस्ट लैंड. स्टूडेंट्स, which type of scenario nowadays we find and before 200 years, that one I discuss here. You know, in here, before 200 years ago, where total depends upon forest. That Adivasis people were also depends upon forest. At that time, the total depends. They collect different type of forest goods. Even that different type of large number of the timbers, logs they collected there, waxes they collected there, and other one is honeys they collected there. And at that time they were the hoarder and gatherer. उस टाइम में वो लोग hoarder थे, gatherer थे. For large number of the timbers also they collected from that forest. बड़ा बड़ा timber भी वो लोग collect करते थे forest से. और for the that imperial kingdom, they also collected that elephants for their armies. And nowadays, different type of industries are established there. You know, most of the industries, iron industries, coal mines we find from that forest. And people are moved from that place to another place. And you know, the peoples, they are left that place, and the government policy also, for that government policy also, they replace from that place to other place. Their economical condition day by day going to decrease, and in our society they live there. In our rural society, 45% that Adivasis live there, and as a daily worker they work there, and 35% that Adivasis placed towards that cities area or town area, and in construction site they work there. Construction site में उन लोग काम करते हैं, and they lead a major life. Minimum they live below the poverty line. The people who are living in a cities area, 35% Adivasis below the poverty line. I am going to discuss about that displacement, a trouble faced by the Adivasis. जब आदिवासी लोग फॉरेस्ट डिस्प्लेस हुए, उन लोग क्या क्या ट्रबल फेस कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ. द पीपल्स हु लिव इन दैट फॉरेस्ट एरिया, दे आर मूव फ्रॉम सिटीज एरिया एंड अदर वन इज इन ए रूरल एरिया, इन ए विलेज एरिया. द पीपल्स लाइवलीहुड टोटल दे डिपेंड्स अपॉन that as a daily worker. According to official figure, according to the census 2001, the official figures show that minimum 50% that Adivasis, they are displaced from that forest area to other place. And the states like Andhra Pradesh, other one is Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, that people 79% Adivasis, they are displaced there and they are moving. Students, the term minority I explain in front of you. Minorities and a marginalization. Whom we call the minority. Minority कौन है ना? हमारा कंट्री का जो पॉपुलेशन है, वही पॉपुलेशन में जो स्मॉल नंबर ऑफ न्यूमेरिकली ग्रुप आते हैं, पीपल्स आते हैं, दे आर नोन एज द माइनॉरिटीज. हियर गिवन एग्जांपल ऑफ दैट है मुस्लिम्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जो कि न्यूमेरिकली अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 हम लोग का कंट्री में बहुत कम थे. वही जो पीपल है, माइनॉरिटी ग्रुप पर्सन है, उनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन ऑल्सो ऑलरेडी आई डिस्कस. अगेन आई टोल्ड यू व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन मीन्स यू नो दैट इज ए टर्म रेफर टू द सिचुएशन. ये एक टर्म है जो रेफर करता है कि सिचुएशन को इन व्हिच an individual or group of individual, जहाँ पे individual और group of individual they are deprived from different type of privileges.
That situation is known as marginalization. And also in that marginalization, the group of individual also different from other. यहाँ पे वो group of individual भी एक दूसरे से अलग होते हैं. They are known as the marginalization. And that group of people are known as the marginalized group. Here that marginalized groups about Muslims I discuss. You know, in our country, India, Muslims are 13.4% according to census 2001. You know, India population are considered to be marginalized. India में ये Muslims को marginalized group से consider किया जाता है. They have over the year been deprived of the benefits of socio-economic development. और हमारा country में रह के हमारा socio-economic development उन लोग को नहीं मिल रहा था. They have little access to education. ये जो मुस्लिम ग्रुप है उन लोग का एजुकेशन कंडीशन भी सही नहीं था. Little amount of peoples who live in our country, they are the educated persons. And they are deprived from their basic amenities like water and electricity. हमारा कंट्री में उन लोग जो बेसिक amenities है वो भी नहीं मिल रहा था. Just like the water and electricity. In public employment too, they are always behind for other communities. ऐसे ही पब्लिक जो हम लोग को जॉब देता है, गवर्नमेंट जॉब में भी उन लोग बहुत पीछे है. उन लोग को भी बहुत सारा फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था. एंड इन इंडियन गवर्नमेंट सेट अप द हाई लेवल कमेटी इन द ईयर 2005. हमारा कंट्री में 2005 में एक कमेटी बना था. वो कमेटी का चेयरपर्सन थे जस्टिस राजेंद्र सच्चार. द कमेटी एग्जामिन The socio-economic and educational status of Muslim community in India. 2005 में जो कमेटी बना था, कमेटी में वहाँ पे उसका जो चेयरपर्सन है ये सर्वे करके देखे कि हमारा कंट्री का जो मुस्लिम्स है उनका कंडीशन अच्छा नहीं है. It observed that the status of the Muslim community is matter was the comparable to other marginalized community like scheduled caste and a scheduled tribe. यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ जब ये मुस्लिम ग्रुप को कंपेयर किया गया, देयर कंडीशन आल्सो सो मच मिजरी दे गॉट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन. इन हियर आई एम गोइंग टू हाउ दैट मुस्लिम्स इकोनॉमिकली दे आर मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी and they are social marginalization also I discuss here. Students, you know, the people that Muslims who live in our society, they are known as the marginalized group. You know, the other dimension which are experienced by the Muslims is economic and social marginalization. That a Muslim, that customs and practice such as wearing burqa, fez, that wear make them different from others. उन लोग जो बुर्खा पहनते हैं, जो फेस के लिए उन लोग हमारा सोसाइटी से अलग जैसे देखने के लिए मिलते हैं. एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंट एंड दे आर कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रॉम आवर मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी. वो अलग दिखनाई देते हैं. एंड यू नो this social marginalization that has forced them to migrate from the place where they have lived of leading to ghettoization. ghettoization जैसे वो अपना मेन स्ट्रीम हम लोग का मेन स्ट्रीम से अलग चले जाते हैं और अपने आप को वो डिफरेंट बना लेते हैं. घीटो जैसा एक पर्टिकुलर प्लेस में ये कम्युनिटी रहते हैं. एंड यू नो समटाइम्स ऑल्सो वी फाइंड सम दलित who are different from our society, that they are also, that a Muslim also, they feel themselves Dalit. And you know, it is quite essential to bring a basic that a communities in the mainstream. उन लोग को हमारा mainstream के साथ उन लोग को मिक्सअप करने के लिए हमारा गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी भी फॉलो कर रहा है. And you know, the development and other opportunity also provided by our government. And you know, it is necessary to protect the right of the minority and defined in the constitution. हमारा constitution भी उन लोग को बहुत सारा facilities दे रहा है और उनका rights को प्रोटेस्ट कर रहा है. And you know, in order to protest our country, that unique diversity, हमारा country में एक unique diversity को रखने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए हमारा गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी फॉलो कर रहा है और अपहोल्ड कर रहा है द आइडियल ऑफ इक्वालिटी
आइडिया को इक्वलिटी अपहोल्ड करके रख रहा है।